वेलकम टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज। उसमें जो पहला पार्ट है दैट इज data abstraction, which is a very major piece of the puzzle when we are talking about object oriented programming. So object oriented programming exactly है क्या चीज़? Object oriented programming is just a set of programming practices या techniques. It has nothing to do with language, it has nothing to do with syntax. अगर आप ये टेक्निक्स एक ऐसी लैंग्वेज में भी अप्लाई करें जो कि सिरे से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती ही नहीं है, तो देन यू कैन एमुलेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बिहेवियर इन दैट लैंग्वेज। मिसाल के तौर पे, अगर आपने लिनक्स कर्नल का नाम सुना हो, बेसिकली इट वाज रिटन इन प्योर सी, और उसके अंदर इन्होंने दे हैव यूज्ड दीज टेक्निक्स to emulate object-oriented behavior in a language which is purely C and it does not support any object-oriented features. GTK एक बहुत ही मशहूर library है to create GUI. It is also written in C. और Doom is a game which is very famous. और इसका source code भी online available and you can check this out yourself. So basically इन सब software में they are written in pure C, जो कि C++ के features को support नहीं करते, बट इसमें डेवलपर्स ने ऐसी मेथडोलॉजी यूज़ की है, अपने सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिज़ाइन किया या अरेंज किया है सो दैट दे हैव अचीव्ड दिस पैराडाइम कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें जो सबसे मेजर एक पार्ट है इस सब का दैट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। सो दे आर बेसिकली क्रिएटिंग देयर software so that such that it's modular, it's abstract, just like a car's engine basically. उसमें मुख्तलिफ pieces होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ जाके फिट होते हैं। Anyways, to summarize, object-oriented programming is a set of practices and it's completely independent from any language or syntax. In order to understand object-oriented programming, we need to understand abstraction, what abstraction actually is. Abstraction की कुछ forms हम past में देख चुके हैं. For example, we had this expressions. हमने हर expression को एक नाम दिया था और फिर हमने जब भी हमें एक expression चाहिए होती थी जहाँ पे भी हम उस नाम से फिर उसको यूज़ करते थे। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमने 355 by 133 को नाम दे दिया पाई, एंड वेन एवर यू need to use the value of pi, you just simply invoke that name and that is going to refer to that value. So this is the first example of putting this expression in a black box and then using that black box again and again to calculate the area and then calculate the circle. So abstraction is essentially to hide away the details and showing only the necessary portions. फिर दूसरी जगह जो abstraction हमने देखी वो थी functions. Functions में we made a black box, we put a code in it which was an unnecessary detail for the user of this function. And then all the user basically cared about is the inputs and the output. A function जो है that's a black box. Whenever you need to use the function, you just use the black boxes again and again and then you'll have your desired results. You don't need to look inside this function. So this is the second example of abstraction. Reality में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं they are made up of compound data, non-scalar data, जिसके बारे में भी हम देख चुके हैं past में. List is one of the non-scalar structures. Dictionary is one of the non-scalar structures जो कि हम डिटेल से देख चुके हैं. Integer, float, they are scalars because they cannot be decomposed into further smaller components. So non-scalar means कि any structure that can be decomposed into smaller units. So these are a couple of examples that you see on the screen here. Can you pause the video and try to identify the components in all of these non-scalar or compound data types? Okay, revealing the solution in 3, 2, 1. Vector basically can be decomposed into is made up of 3
smaller units, x coordinate, y coordinate, or z coordinate. Or student जो है, that is made up of, you can, the name, roll number, GPA, and many other things, but for now we consider just the necessary ones. Rational number आपको पता है, it's fraction that's made up of numerator, denominator. इसी तरह book is also made up of this multiple compound data which is title, author, price. तो ये जो data है मिल के एक चीज को identify करती है. Now what we want to do is we want to do the same with data that we did with code. मिसाल के तौर पे हमने कोड को ब्लैक बॉक्स में डाला, उसको नाम दे दिया, एंड दैट इज आवर फंक्शन. और जब भी हमने फंक्शन यूज करना है, वी जस्ट यूज द ब्लैक बॉक्स अगेन एंड अगेन. दैट मेक्स आवर कोड वेरी मॉड्यूलर, इजी टू चेंज एंड एब्स्ट्रैक्ट. अब जब हम कंपाउंड डेटा की बात करते हैं, वी ऑल्सो वॉन्ट टू डू द सेम थिंग. वी वॉन्ट टू पुट ऑल द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड स्ट्रक्चर इन अ ब्लैक बॉक्स, और उस ब्लैक बॉक्स को हम नाम देंगे, और फिर हम उस चीज़ को उस ब्लैक बॉक्स के तौर पे यूज़ करेंगे अगेन एंड अगेन विदाउट वरिंग अबाउट के उसके अंदर क्या है. सो दैट्स कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन. बेसिकली उसमें वी डोंट केयर अबाउट द इंटरनल्स. फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक अ लुक एट एन एग्जांपल. आपकी स्क्रीन पे एक ग्राफ है, इसके अंदर यू हैव टू वेक्टर्स. बेसिकली यू कैन थिंक ऑफ दीज एज पोजीशन वेक्टर्स. अब हाई स्कूल मैथ में हम क्या करते थे, जब हमें वेक्टर चाहिए होता था, उनका सम, एक वेक्टर a प्लस b, so we know we can write it this way. We know that when we add two vectors, we will get another vector. अब इसमें आप देख रहे हैं कि हमने कोई कंपोनेंट्स का जिक्र नहीं किया, कितने डायमेंशनल वेक्टर्स हैं, वी डोंट केयर अबाउट दैट. दिस एक्सप्रेशन विल वर्क ऑन एनी कंपोनेंट्स दैट दीज वेक्टर्स हैज. टू डायमेंशनल वेक्टर है या फिर थ्री डायमेंशनल वेक्टर, डजंट मैटर. तो इसी तरह और ऑपरेशंस जो कि आप वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, यू आर ट्रीटिंग बेसिकली दीज वेक्टर्स एज black boxes. So you are subtracting one black box P from another black box A and you get another black box D. अब उस D के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, X क्या है, Y क्या है, Z क्या है, again we don't care about those at this point. So ये एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आप पहले देख चुके हैं, लेकिन आपने उसको इस तरह से रियलाइज नहीं किया था. अभी भी एज एन एक्सरसाइज अगर आप अपने मैथ के कोर्स में जाएं और उसमें आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि कौन कौन से structures, they look like a black box which you're using without worrying about the internal details. Here we look at okay, so this is a big idea, basically what data abstraction exactly is. So data abstraction is a methodology या प्रोग्रामिंग करने का एक खास तरीका है जिसमें we separate how the data is internally represented and we separate how it is actually manipulated. यानी कि डेटा को और उसके ऑपरेशंस को हम completely separate कर रहे हैं and we're putting those in a black box. So here we take a look at an example. Rational numbers आपको पता है कि it's a kind of a fraction which is represented as being a numerator and a denominator. And एक चीज मैं आपको मजेदार दिखाता हूँ. Let me just exit this. So this is our terminal. अगर आपके पास एक रैशनल नंबर है 1/3, अब आपको पता है कि 1/3 रियलिटी में it's like 0.333 and this 3 never ends. It goes up to infinity. So this means 1/3 जिसको हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, you simply cannot do that on a computer because computer memory is limited. So this means that 1/3 cannot be represented exactly in a computer. लेकिन जब हम इसको चला के देखते हैं तो you see कि it gives us some answer. Fine, let's copy this. And if we do 1/3, is it equal to 0.333? Sure, looks true. But what about this? 0.3330. Clearly this is not 1/3 because 1/3 goes all threes up to infinite. So जब हम इसको enter करते हैं, it also says true, but it's not. And the reason is कि storing the approximation of 1/3, it's not the true 1/3. अब क्या true 1/3 हम store कर सकते हैं कंप्यूटर पे?
In a way, yes, by storing its numerator and a denominator separately as a compound data type, non-scalar data type के तौर पे. All right. So non-scalar data type के तौर पे अगर हम इसको store करते हैं तो एक चीज, if I ask you, imagine कि आपके पास ये functions given हैं. एक function है rational और इसके अंदर दो इंटीजर पैरामीटर जा रहे हैं n और d. दूसरा फंक्शन आपको दिया हुआ न्यूमर, उसके अंदर एक रैशनल नंबर जा रहा है. रिमेंबर, दिस इज अ रैशनल नंबर, दिस इज नॉट एन इंटीजर, दिस इज अ कंपाउंड डेटा टाइप जो पैरामीटर में जा रही है. तीसरा है डिनोम, which takes a rational number. So basically this rational function is going to create a new rational number with the value numerator and the value denominator, and then it's going to return the rational number. Essentially what it's doing is it's creating a black box. It's putting n and d inside that black box, and then it's going to return that black box. वो exactly किस तरह से पढ़े हुए हैं, ये represent हो रहे हैं, we have absolutely no idea. ये function कैसे implement हुआ है ये भी आपको नहीं बताया गया और we have no idea. Similarly, numer gives you the numerator of that rational number जो कि इसके parameter में आ रहा है. Again, इसके parameter में एक black box जा रहा है. न्यूमर को ही सिर्फ पता है कि इस ब्लैक बॉक्स में उसने कैसे झांकना है और आपको न्यूमरेटर देना है. We have no idea. Similarly, the denominator also does that. अब जब आपको ब्लैक बॉक्स के अंदर झांकने की इजाजत नहीं है और आपको नहीं पता कि उसके अंदर रिप्रेजेंट कैसे होगी चीजें, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है उस ब्लैक बॉक्स के अंदर देखने का, वो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर functions, and these are called accessor functions. Okay, fine. Given these three functions, let's say you're given these three functions जिनकी functionality already implemented है. Now, are also given the fact that you have absolutely no idea how these functions are implemented and how the rational numbers are actually stored in the black box. But you are getting a black box at the end. Fine. Let's suppose you want to add two rational numbers. So अगर आपने दो rational numbers को add करना है तो what you do is दोनों का LCM लेते हैं, that becomes the denominator. Basically, it's a kind of a fancy cross multiplication here, and that's what we're doing. And the answer when we add half by 2/3 is 7/6. Now, ये जो प्रोसीजर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, using this and also keeping in mind the previous slide functions which are rational, जो कि एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ले रहा है और रैशनल नंबर रिटर्न कर रहा है, and the numer function and this should be denominator denom function. Sorry for the typo. You need to write this function which adds two rational numbers. And remember, this x is a rational number, this y is a rational number. So basically इस function के अंदर दो black boxes जा रहे हैं. आप इन function black boxes के अंदर नहीं झांक सकते. आपने क्या करना है, आपने इन दो black boxes को add करना है और एक तीसरा black box बना के return करना है. How would you do that? So pause the video and I'll resume in 3, 2, 1. सो बेसिकली आप सबसे पहले जो काम करेंगे वो इन ब्लैक बॉक्सेस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे फॉर बोथ ऑफ दीज रैशनल नंबर्स. वंस यू हैव डन दैट, फिर तो इट्स जस्ट फॉलोइंग दैट एक्सप्रेशन जो कि हमने भी ऊपर फ्रैक्शंस के लिए देखी थी. You multiply numerator with the denominator, and then you add with the product of numerator of the other and denominator of the first. That's going to be the entirely numerator. So basically, नए rational number के लिए हमने numerator बना लिया. Then denominator is just going to be the multiple of these two denominators of the first one and the second one. ठीक है, numerator denominator तो हमारे पास आ गया. But the third requirement was, apart from adding two rational numbers, is that you need to return a rational number. और हम रैशनल नंबर बनाएंगे कैसे, क्योंकि हमें ब्लैक बॉक्स तो बनाना नहीं आता और उसके लिए हमें एक पहले से फंक्शन दिया हुआ था, दैट्स कॉल्ड रैशनल. दिस क्रिएट्स अ ब्लैक बॉक्स एंड देन इट रिटर्न्स दैट. सो हम न्यूमिनेटर की वैल्यू इसमें पास करते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू इसमें पास करते हैं, एंड वी हैव अ रैशनल नंबर दैट इज द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स. तो इससे हमें क्या सबक मिला, वो ये
कि ना तो हमें रैशनल नंबर्स की इंटरनल्स का कुछ पता था, ना हमें उन फंक्शंस का कुछ पता था जो कि उसके अंदर से चीज़ें आपको पकड़ा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करने में कामयाब हो गए. So every detail is being abstracted away at this point, and we are working using these abstractions. So now you try this. Basically we have three functions, एक तो multiply rationals, then you have print rational, and then you have rationals are equal, whether two rationals are equal. Can you implement these? Multiply rational में आपको पता है कि when you have two rational numbers, for example you have 1 by 3 and then you have 2 by 4, तो इनके न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 1 स्टार 3, ये उसका न्यूमिनेटर हो गया, और जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वो नए रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर हो गया. सो दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इन 3 by 12. Right? How would you implement that? So you're given one black box, you're given a second black box. How do you create a new black box which is a multiple of two rational numbers? Similarly, how do you print a rational? Basically, how do you extract information out of the black box so that you can show it on the screen? How do you do that? And again, the rationals are equal, whether two rationals are equal or not. इसमें हम simplify नहीं कर रहे, वो हम आगे जाके देखेंगे कि how do we do that. So pause the screen at this point, and in the next slide I will show you the solution to this problem. So showing in 3, 2, 1. So add rationals हम देख चुके हैं. Now we have mul rational exactly like we discussed. दोनों rationals यानी दोनों ब्लैक बॉक्सेस में से सबसे पहले तो आपको न्यूमिनेटर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स गोइंग टू गिव अस द न्यूमिनेटर ऑफ द प्रोडक्ट, और इसी तरह जो डिनोमिनेटर है वो हम एक्सट्रैक्ट करके वी मल्टीप्लाई एंड देन दैट्स गोइंग टू गिव अस द डिनोमिनेटर ऑफ द रिजल्ट. अब इन दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपने रैशनल नंबर कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करना है, and that is going to create a new black box with the new values, and then it's going to return that. इसी तरह print rational getting numerator denominator, और exactly उसी तरह ही rational numbers. So अभी तक आप देख रहे हैं कि rational numbers के जो objects हैं, ये जो डेटा टाइप है बेसिकली ब्लैक बॉक्सेस भी कह सकते हैं, तो उसके अंदर से डेटा लेने के लिए हमने इन फंक्शंस का सहारा लिया है, जिसका हमें अंदर से कुछ भी नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं. और सो फार वी आर डूइंग ग्रेट. अभी तक हमने डेटा एब्स्ट्रैक्शन की दो चीज़ें डिस्कस की थी. एक तो ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स के डेटा रिप्रेजेंट कैसे होता है और डेटा मैनिपुलेट कैसे होता है. सो फार हमने जो डेटा मैनिपुलेट कैसे होता है वो वाला पार्ट वी हैव डन, because data is manipulated using, created using rational, manipulated using numer, basically the same thing. This is all of this is manipulation. Then these are operations जो कि उस डेटा पे अप्लाई हो रहे हैं. अब जो दूसरा पीस था, डेटा रिप्रेजेंट कैसे होता है, अब वी टॉक अबाउट दैट. We can represent data with various techniques. Let's say हम लिस्ट से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम टपल से कर सकते हैं, डिक्शनरी से कर सकते हैं. There are many methods. So what rational constructor is doing, constructor basically is a special method which creates something and then it returns that. Or these are called accessor which peek into the black box and give you some piece of that box, some value that you need. Right? And a numerator basically that's going to be the first component. जिस तरह से हम रख रहे हैं, numerator is the first component, denominator is the second component. तो numer function we can implement this as the first component of this list and denom as the second component of this list, right? And now given this implementation we can see this in action. Let me just clear it up. Let me clear this and let me quickly
copy from here and paste it over here. Okay. So ये चीजें basically आप already implement कर चुके हैं. All we have done is we have written the constructor. We have इसको अब दो pieces में divide कर रहे हैं. This is what data abstraction actually is. So एक piece में how data is internally represented, we have defined that. दूसरे piece में how data is being operated upon, we have implemented the functionality कि आपने data को implement operate कैसे करना है. Now if we run this code, now we can start querying, let's say creating rational numbers. Half equals to rational 1 numerator and 2 denominator. So this is going to create something, a rational number that is half. If we print rational half, तो आप देखेंगे कि print rational number ने rational number लिया, numerator print किया, फिर slash print किया, फिर denominator print किया, and that prints half. Now third equals to rational, that's going to be 1 by 3. So ये हमने 1 by 3 को represent किया. Let me just make this window a little bit bigger. Right. Now what we want to do is we multiply these two rational numbers and let's see what result do they give. Here we used the multirational, which are taking these black boxes and then extracting information, multiplying these rationals and then returning a rational. और फिर वो जो rational है जो multirational ने return किया है, that goes inside the print rational, which then treats that as a black box and then tries to print that, extract values from it and then tries to print that. So 1 by 6. So इसी तरह add rational is going to do exactly the same thing. और आप देख रहे हैं कि this is not in its lowest form. And then you can print are equal. So that gives us that both are not equal. Even though they're not equals. Yeah, sure. So क्या आपने ऑब्जर्व किया कि जो फंक्शंस हमने इनकी इंटरनल स्टेट या रिप्रेजेंटेशन के मालूम हुए बगैर लिखे थे वो सारे बिल्कुल काम कर रहे हैं. And that should give you an idea how powerful abstraction is. All right. So here what we have is we have our constructor, the rational function. It creates a black box जिसके अंदर इसने numerator डाल दिया और denominator डाल दिया. Now the only way to read this black box and to extract numerator and denominator are these two special functions which are called accessor functions. So इन्हीं दो को इजाजत होनी चाहिए कि इस black box में जाएं और यहाँ से डेटा रीड कर दें. So अब आप देख रहे हैं कि this is a programming practice. अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो you will be following this paradigm. अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो you won't be following this paradigm no matter if you are using the object oriented syntax जो कि available है आपको in many programming languages. Okay, so the only way to access using accessors. Moving on. How do we convert the fractions in its simplest form? अभी हमने एक computation देखी थी जिसमें they were not in its simplest form. How do we fix that without changing any other code? And देखें अब यहाँ पे गौर से कि since ना आपको यहाँ पे abstraction नजर आएगी. Since we are treating this rational as a black box, हम उसकी internal को छेड़ भी नहीं रहे. इसका मतलब है कि हम ओरिजिनल ब्लैक बॉक्स को चेंज कर दें जाके और जो ब्लैक बॉक्स जहां जहां पे यूज हो रहा है वहां पे हमें चेंज करने की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी. सो ये हमने नया ब्लैक बॉक्स बनाया और नाउ इट्स रिटर्निंग अ टपल इंस्टेड ऑफ अ लिस्ट. व्हेन वी रन दिस एंड वी redo our computations,
So for example, पहले हम half बनाते हैं. You first have to import gcd from math, import gcd. Let's run it. और it's functional. अब आप देखेंगे कि let's start creating rationals, half and thirds. Sure. Actually, let's create another rational. आपको immediately इसको नजर आ जाएगा effect, and that is 4/8. Right, and let's call it 4/8. And if we print rational 4/8, yeah, basically the function name is incorrect, but 4/8, you'll see कि it's now being saved in its simplest form. बल्कि अगर हम बाकी computations को भी apply करें, for example, we were adding rationals and that was giving us 6/9 previously, now it's giving us 2/3. So आपने देखा कि एक फंक्शन को, एक ब्लैक बॉक्स को अगर हम चेंज भी करते हैं तो इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनी अदर पोर्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर जो कि उस ब्लैक बॉक्स को यूज कर रहा है. और एब्स्ट्रैक्शन का मकसद भी यही है, टू हाइड द डिटेल्स. डोंट वरी अबाउट द डिटेल्स. Right? So zero change required elsewhere. Now abstraction barrier. Abstraction barrier basically क्या चीज़ है? अगर आपने फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर्स, आपका जो एक प्रोग्राम का पोर्शन है जो कि रैशनल नंबर्स की टर्म्स में ऑपरेट करता है, बेसिकली रैशनल नंबर्स उसको इस्तेमाल करने हैं एज अ होल, नॉट उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स. सो फॉर एग्जांपल आपका प्रोग्राम को जरूरत है कि 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करना है अपने फंक्शन में, जो कि हमने बनाया भी था. तो यू आर ट्रीटिंग दोज रैशनल नंबर्स एज अ होल वैल्यू, और देन यू कुड यूज द फंक्शंस जो कि हमने बनाए थे विच यूज दीज रैशनल नंबर्स एज अ होल वैल्यूज. लेकिन अगर आपके कुछ पोर्शन को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर explicitly access करना है, then you have to use these functions, accessors or constructors. Alright, so basically ये जो functions हैं ये abstraction barrier आपका बनाते हैं. अगर आपके प्रोग्राम को rational की whole rational as a whole use करना है, लेकिन आप जाके उसके accessor न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक्सेस कर रहे हैं, तो then it means कि you are breaking that abstraction barrier. So each function in this last column is enforcing an abstraction barrier. So मिसाल के तौर पे, again, if we put this rational number in a black box with numerator and denominator, so the only way that any function can look inside this black box is this numerator and denominator. Add, mul, print equal, इनको इजाज़त नहीं है कि वो इस black box में जाएं और directly n numerator denominator की value देखें. Which means कि आपके पास numerator और denominator ने एक abstraction barrier enforce किया हुआ है. You cannot, anything else cannot go inside this barrier. That's why there's a box around this to show this barrier. अगर add, mul, print equal या किसी और function ने numerator और denominator की value access करनी है, तो it has to go through numerator or denominator inside the black box and then get that. Now the interesting thing is abstraction barrier तो हमने देखे, but abstraction barrier violation क्या चीज़ है? It happens when a higher level function is bypassed to use the lower level implementation details. What does that mean? Consider this. First of all, you have square rational जो कि use कर रहा है mul rational को जो भी हमने implement किया था. So this is a higher level function, more abstract. And then you have a square function which is violating abstraction barrier once.
अब यहाँ पे वायलेशन क्यों हो रही है? बिकॉज स्क्वायर रैशनल एक हायर लेवल फंक्शन यूज कर सकता था, जिस तरह कि यहाँ पे उसने मल रैशनल किया है, लेकिन उसने हायर लेवल को छोड़ के एक एक बाउंड्री स्किप की और लोअर लेवल फंक्शन को यूज किया, तो उसने एक वायलेशन की। तो इसी तरह यहाँ पे भी उसने डिनोमिनेटर एक्सेस किया, हालांकि उसका काम हाई लेवल फंक्शन से चल सकता था। अब जो दूसरी एग्जांपल है स्क्वायर रैशनल वायलेटिंग ट्वाइस, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपने पहले तो एक हायर लेवल फंक्शन छोड़ा, फिर उसके बाद आपने दूसरा हायर लेवल फंक्शन भी स्किप किया, और आपने सीधा ब्लैक बॉक्स के अंदर जाके उसकी वैल्यू डायरेक्टली एक्सेस कर दी। एंड दिस इज रियली रियली बैड, हॉरिबल एक्चुअली। सो इसकी जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, you only access the internals of this black box using accessors, at the numerator or denominator, और ऑब्जेक्ट की हो सकते हैं डिफरेंट accessors हो। accessor का मतलब है कि they are the only function that can access the internals, and these operations mult print जो कि हमने implement किए, they should not directly access um, the internals basically of this black box, or square of a rational number that should only access the rational numbers as a whole through the mul, add और print functions जो कि हमने बनाए थे। अगर स्क्वायर फंक्शन फॉर एग्जांपल डायरेक्टली इन सब को बाईपास करके, बिकॉज दीज आर हायर लेवल, एट हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन एज कंपेयर टू डिनॉम और न्यूमर, न्यूमर लेवल और डिनॉम जो हैं वो लोअर लेवल एब्स्ट्रैक्शन पे हैं। वाई आर दे एट लोअर लेवल? बिकॉज ये आपकी एक्चुअली इंटरनल डिटेल्स के करीब हैं, तो जितनी इंटरनल डिटेल से दूर होते जाएंगे उतना हायर एब्स्ट्रैक्शन पे आप जाते जाएंगे। तो आपके फंक्शंस आपके प्रोग्राम में दे आर अरेंज्ड इन एन एब्स्ट्रैक्शन हायरार्की। सो यहाँ पे बेसिकली आपके पास स्क्वायर वंस, बेसिकली दिस इज अ वायलेशन वंस। अब यहाँ पे एक वायलेशन क्यों हुई है? बिकॉज आप यहाँ पे बाउंड्री तोड़ के, एक बाउंड्री तोड़ के आप अंदर चले इलीगली, और आपने न्यूमरल डिनोम को एक्सेस किया, इवन दो यू शुड हैव यूज्ड मल। एंड देन हियर दूसरी इंप्लीमेंटेशन में तो आप बहुत ही गलत कर रहे हैं कि आप दो बाउंड्री तोड़ के अंदर चलेंगे डायरेक्टली, और फिर आप डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं। यहां पे आप अगेन मल से गुजारा कर सकते थे, और आपको करना चाहिए था, बट आपने ना सिर्फ न्यूमर की बाउंड्री तोड़ी, बल्कि आपने जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है उसकी बाउंड्री भी तोड़ दी, और फिर आप अंदर चले गए। So don't ever do that, because this is going to result in a very serious problem or set of problems. Why is that? Well, let's see why is that. अगर आप डायरेक्टली यहाँ से बाउंड्रीज को तोड़ के अंदर जाएंगे और एब्स्ट्रैक्शन को वायलेट करेंगे, तो फिर क्या होगा? अगेन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन वायलेट कैसे हो रही है? बिकॉज दिस इज सपोज टू बी अ ब्लैक बॉक्स। जब आप सारे के सारे फंक्शंस को बाईपास करके डायरेक्टली उसके अंदर जा रहे हैं, तो दिस इज नो लॉन्गर अ ब्लैक बॉक्स, यू नो ऑलरेडी व्हाट्स इनसाइड इट, and then you're using it. And when you do that, let's see कि इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। So you try, right now our rational numbers are internally represented as a list. Can you change the internal representation to a dictionary maybe? And what portion of the program really needs to change? So do this. I'll pause the video for 3 seconds, and then we come back after you have tried it. 3, 2, 1. So this is the solution. The only thing कि आपने इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को लिस्ट से डिक्शनरी बनाना इज द कंस्ट्रक्टर, जहाँ पे आप एक्चुअली डिक्शनरी बना के रिटर्न कर रहे हैं। इट्स द न्यूमर जो कि इंटरनल ब्लैक बॉक्स के अंदर झांक के आपको वापस देता चीज, एंड इट्स द डिनोम, इट्स डज द सेम थिंग। बाकी और कहाँ पे आपको चेंज करनी पड़ी है? थैंक गॉड, ड्यू टू एब्स्ट्रैक्शन एब्सोल्युटली जीरो जगह पे चेंज करनी पड़ी है। जस्ट इमेजिन अगर आपने इसको एब्स्ट्रैक्शन बैरियर को वायलेट करते हुए इंप्लीमेंट किया होता अपना स्क्वायर ट्वाइस, और हम डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देते, तो आपका सारा कोड गलत हो जाता।
So again, you try this. Suppose we have a point. Basically, हम game बना रहे हैं और हमें points की ज़रूरत है. Can you spot abstraction barriers or how many barriers are violated and how do we fix this? सबसे पहला, this p equals to 1, 2. We are representing this as a list. Can you spot any abstraction barrier here? Let me pause. 3, 2, 1. Well, yeah. सबसे पहले तो आपने पॉइंट को खुद से ही बना दिया ना कि उसकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन आपने खुद डिफाइन कर दी मैन्युअली कि आई से कि पॉइंट इज गोइंग टू बी a list and first item is going to be x or second item is going to be y. Don't do that. Always use constructors. For example, write a function which creates a point out of xy coordinate and then it returns that. और इसकी रीजन अभी हमने ऊपर रैशनल नंबर्स के साथ भी देखी है. अगर आपको इंटरनल रिप्रेजेंटेशन चेंज करनी पड़ जाए तो फिर आपका प्रोग्राम सारा का सारा खराब हो जाएगा, because you are breaking abstraction barriers. Okay, and what's wrong here in this case? Pause the video and I'll come back in 3 seconds. 3, 2, 1. Well, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर तो आपने यूज कर लिया and you have made a point, लेकिन here you're directly accessing the internal structure of the point, which is an abstraction barrier violation we saw. So what's the solution? Don't do this. Always use an accessor function जो कि आपके इस black box में जाएगा और आपको value देगा. Don't go into the black box yourself. That is important, because when you do, you will break the abstraction. और जब आप abstraction break करते हैं तो फिर आप जितना मर्जी classes का syntax use कर लें, it's not going to be a proper object-oriented programming. Okay, at this point हम distance निकालना चाह रहे हैं between point 1 and point 2, and this is our code. Can you identify abstraction barrier violations or how many barriers were violated here? Let's pause the video, solve it, and then come back. 3, 2, 1. So basically here one level was violated because why? Because you are bypassing the accessors and you're accessing the data directly. Instead, what you should have done is you should have used the accessors to get the x coordinate, use the accessors to get the y coordinate of the points, and then compute the distance between that. And that is bad when you access data directly, because again, it neither from I repeat इसलिए कर रहा हूँ because it's so important. When you see inside, when you peek inside the black box yourself, you are violating abstraction. And that's exactly the opposite of what object-oriented programming paradigm your practices suggest. Okay, so this is another example. Let's say you want to check whether a point is inside a circle or not. How do we do that? अब circle जो है इसका center is C and we have a point P, or we know the radius of the circle is this red thing, radius. अब if the distance between P and C is greater than the radius, we know कि point circle से बाहर है. If the distance between the point and the center is less than radius, इसका मतलब है कि वो circle के अंदर है. Now, this is a function we have written is the point within the circle where it takes a black box point, it takes a black box center, which is also a point, center of the circle, and then it takes a integer radius. And this code essentially what it's doing is it's going inside that black box directly and then it's going to create calculate the distance, or अगर वो distance radius से छोटा है so you're inside, otherwise you're outside. Now, can you identify abstraction violation here? Again, pause the video and we'll come back after 3 seconds. 3, 2, 1.
So this is what's going on over here in this code. What you see here is this code is trying to violate one boundary within circle, basically distance use कर सकता था. It bypassed the higher level function and it tried to access not only immediately lower level बल्कि उससे भी नीचे जाके it accessed the data directly, and this is a horrible crime. So remember, जब भी आप एक हायर लेवल या ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हो और आप वो छोड़ के लोअर लेवल या उससे कम एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन यूज़ करें, यू हैव वायलेटेड द एब्स्ट्रैक्शन बैरियर. और प्रोग्रामिंग में आपने ये नहीं करना. सो व्हाट्स द सोल्यूशन? द सोल्यूशन इज go through this boundary, basically directly access the most high level, the most abstract, the highest level function that you can find, which is distance. क्योंकि ये डाटा से सबसे दूर है और आप इसको यूज करेंगे तो then you will be in a good situation. And the solution is this: just use the distance function which I've already made, and if that returns whatever that returns is less than radius, we know okay it's inside the circle, right? So to summarize today's talk, data abstraction is basically separating how the data is represented internally and separating how it's manipulated or how it's operated on. So for example, rational numbers ki example ne to how data is represented, you can represent it one way is using a list, or how data is manipulated using operations like constructors or accessors and add rational, multiple rational, and so on. So basically जो operations हैं, this is going to create a hierarchy of abstractions. कुछ functions ज़्यादा abstract होंगे, कुछ कम abstract होंगे. आपने हमेशा सबसे ज़्यादा abstract function use करना है अपने code में, क्योंकि अगर आप सबसे ज़्यादा abstract function को होते हुए कम abstract function use करेंगे तो you have committed a crime, you have violated abstraction. Again, abstraction barrier violation is exactly that कि higher level function के होते हुए you're using the lower level implementation details. And the power of abstraction is जिस तरह कि आपने अभी देखा था जब हमने point rational की internal details को list से dictionary में change किया था. It makes code very modular, easy to change, less buggy, and very flexible. So that was it for today. और next time फिर हम यहाँ से लेके चलेंगे और हम देखेंगे कि objects exactly क्या होते हैं. Objects के अंदर हम data को और functionality दोनों को black box में कैसे डाल सकते हैं, and the class syntax जो कि हमें इस प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है. That's what the programming languages are for. See you guys next time. Office.